हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपना स्टार्ट करने वाले क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ वाटर टू एयर इट्स स्पीड इंक्रीज। A ray of light is incident at an angle of 30 degree to the surface of a plane mirror. Then the angle between the incident ray and the reflected ray must be 120. ENT specialist doctor uses a concave mirror, a small aperture. Next, diopter meter is the instrument is used to measure the power of a lens. Next, true false की बात करेंगे. Laws of reflection are applicable to any type of mirror. So true. The central part of a thin lens made of glasswork is a rectangular glass slab. True. A lens has a power P is equal to 5D, so its focal length is F is equal to 0.2, so false. Next, the medium having the greater mass density is said to be the most optical denser medium, so also false. Next, if the absolute refractive indices of water and the glass are 4 by 3 and 3 by 2 respectively, then what is the ratio of the speed of light in water to that in a glass? तो आंसर आएगा 9.8. Next, as shown in the following figure, the light rays travel from the medium A to medium B. Then refractive index of the medium B relative to medium A would be root 3 by root 2. Okay. Next, the absolute refractive indices of the substance A, B and C are 1.33, 1.65 and 1.46. So in which substance is the speed of light maximum? So medium 1. Next, where should be the object be placed to obtain its real image of the same size of the object using a concave mirror? So at the center of curvature of a mirror. The image formed by a concave mirror is observed into a virtual erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Option D, between the pole of the mirror and its principal focus. 14 number, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of minus 15 centimeter. The mirror and a lens are likely to be both concave. Next, which of the following lenses would you prefer to use while reading a small letter found in a dictionary? तो उसमें आएगा ऑप्शन सी, a convex lens of a focal length 5 centimeter. Next, answer the following question in briefly. So first questions, what is the angle of reflection when a ray of light falls normally on a mirror? So 0 degree is the angle of reflection when a ray of light falls normally on a mirror. Next, which mirror has a large vision area? So convex mirror. Next question, absolute refractive index of a carbon disulfide is 1.63. Then explain this statement from the context to speed of light. तो न्यूमेरिक यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. nm is equal to c upon v. Right, 3 into 10 raised to 8 divided by 1.63 and answer is 1.84 something. Next, between which 2 points on the principal axis of a concave mirror should an object be placed so that the magnification produced by the mirror is m is equal to -3. सो दैट्स आंसर इज m इज इक्वल टू -3 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज मिलेगा आपको रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड मिलेगा. डन. देन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द f एंड c. नेक्स्ट क्वेश्चन, a student traces the path of a ray of light passing through the rectangular glass slab and marks the angle indices I
and angle refraction R and the emergence E is shown the figure. तो मार्क कर दिया गया. The angle of reflection R is marked correctly. Match the following given answer P and Q. Study the ray diagram एंड आंसर लिखना है कि भाई जो डिवाइस दिया गया उसमें नेम ऑफ द डिवाइस वाई. तो आपका वाई क्या है? कॉन्केव मिरर है. आउट ऑफ अल्कोहल विथ एन इज इक्वल टू 1.36 and carbon disulfide with n is equal to 1.63, which is denser optically. तो आंसर आएगा carbon disulfide with a greater refractive index is optically denser than alcohol. Next, define the principal focus of a concave mirror. तो दैट उसमें आंसर आएगा नंबर ऑफ रेज pass parallel to the principal axis. They all are intersecting at a point, and this point is called the principal focus of concave mirror. Next, question number 25. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. तो आंसर आएगा concave mirror. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32. तो f is equal to r by 2. तो आंसर मिलेगा आपको 16 सेंटीमीटर. Question number 27. Light enter from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in a glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to 8. तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? V इज इक्वल टू सी अपॉन इटा जी. तो उसका आंसर मिलेगा 2 into 10 to 8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस. द फोकल लेंथ इज 2 मीटर. तो फोकल लेंथ आपको कॉन्केव दिया गया है तो फिर आपको एफ लेना पड़ेगा -2. तो 1/2. तो आंसर आएगा -0.5. ओके डन. नेक्स्ट section B, answer the following question in short. So first of the question is, what is a plane mirror? Write the nature of an image formed by a plane mirror. तो आंसर आएगा if the reflecting surface of a mirror is flat then the mirror is called a plane mirror. Nature of image की बात करेंगे. The image formed by a plane mirror is always virtual and erect. Second, the size of the image is equal to the size of the object. Third point, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. Fourth point, the image formed is laterally inverted. The left side of object seems to be a right side of the object, vice versa. Question number 2, explain the terms of refractive index. राइट. तो आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइट बैंड्स व्हेन इट एंटर दैट मीडियम फ्रॉम अ वैक्यूम. सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. फॉर ऑल ordinary purposes that are the speed of light in vacuum is taken 3 into 10 to 8 meter per second. Next point, the air, the speed of light is only marginally less and compared to that in vacuum. Correct? उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है. The speed of the object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature of the image. तो उसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी यू वैल्यू एफ वैल्यू आपको गिवन है. आपको राइट फॉर्मूला आएगा मिरर का बोला है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. क्लियर. सो दैट्स वैल्यू पुट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी और इसके साथ साथ उसका नेचर पोजीशन इज आल्सो गिवन. नेक्स्ट, a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed the lens diverging or converging? तो पावर दे दिया गया था 1.5. फोकल लेंथ आएगा
6.2/3 मतलब 0.67 आएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 0.67 आता है एफ की वैल्यू, सो कन्वर्जिंग आएगा, राइट। ओके, पॉजिटिव है इसलिए। Difference between real image and virtual image. So first point, in this case, the ray of light emanating from an object meet after reflection of refraction and hence its image is formed. Second virtual image, in this case, the rays of light emanating from an object appear to meet after reflection or refraction. Second point, it can be obtained on screen real image, जबकि virtual image it cannot be obtained on screen. Convex lens and concave lens. तो first point, convex कैसा होता है? It is thick at the center and thin at the edges. जबकि concave की बात करेंगे, it is thin at center and thick at edges. Second point, converge a parallel ray incident on it. उसमें converging होगा और concave में आएगा diverging. इसके अलावा कॉन्वेक्स में आएगा वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन ऑलवेज एनलार्ज, जबकि कॉन्केव में वर्चुअल इमेज होगा बट ऑलवेज डिमिनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वॉच रिपेयर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस. तो दैट आंसर आएगा उसका, इफ एन ऑब्जेक्ट इज kept between optical center O and principal focus F of a convex lens, we get a virtual, erect, and enlarged image of the object on the same side of the object. Beyond the distance 2f from the lens, and thus by keeping a watch between the lens and its principal focus, the watch repair can see minute parts of the watch clearly and repairing become easy. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, देन क्वेश्चन गिवन है, क्या है? AB and CD two spherical mirror from a parts of the hollow spherical ball with its center of O and AB is equal to 1/2 1/2 arc CD दे दिया गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ. तो F is equal to R/2. The radius of curvature is the same is in two cases, hence normally the focal length F will be the same दोनों जगह से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से सेम डिस्टेंस पर है. इसके अलावा बट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ए बी इज पॉजिटिव वाइल दैट कॉन्केव मिरर में आएगा नेगेटिव. डन. उसमें ही सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट एंड व्हाई. तो मिरर ए बी विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. मिरर ए बी क्या होगा, डाइवर्ज होगा, राइट, और कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट, which three main sections, which three main rays are used to the locate the image formed by the spherical lens, explain with drawing the diagram. तो question 1, the three spherical lenses, the first ray, the ray parallel to the principal axis. तो आंसर आएगा a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction through the convex lens. Correct? Okay. नेक्स्ट रे टू. रे टू में क्या बताया गया, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो पास करेंगे तो अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस की तरह हो जाएगा, राइट, स्ट्रेट हो जाएगा, करेक्ट, पैरेलल एक्सिस की तरह. नेक्स्ट, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग through the optical center of lens will emerge without any deviation. इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 2, write us not on the power of a lens, write the definition of the power of a lens, states its SI unit, name the instrument used to measure the power of a lens. तो स्टार्ट करेंगे. Power of lens. The power of lens is defined as the reciprocal of focal length of a lens. When the light rays parallel to the principal axis पे pass करेंगे are incident on a convex lens,
दे आर कन्वर्ज हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस F2 पे। When the light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they appear हो जाएगा और diverge होगा from principal focus पे। This ability of lens to convert or to diverge the light rays depend पे रहेगा on the focal length. So that's why power of lens P is equal to 1 upon F. And उसका ऐसा यूनिट आएगा डायोप्टर। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज करने आएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर द पावर ऑफ लेंस, जिसको बोलेंगे डायोप्टर मीटर। न्यूमेरिकल्स है क्लियर, मिरर वाला है तो फॉर्मूला 1/v + 1/e = 1/f। क्लियर, एक बार देख लो और राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो न्यूमेरिकल्स, और ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते ही है, जहाँ पे फोकल लेंथ दे दिया गया है, राइट इमेज दे दिया गया, मतलब v, आपको u फाइंड करना ऑब्जेक्ट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हेडलाइट ऑफ कार तो कॉनकेव, और उसका रीजन द लाइट सोर्स इज केप्ट एज द फोकस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्रैक्शन a strong parallel beam of light emerge. साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल्स तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। दिस इज बिकॉज इट्स फील्ड ऑफ अ व्यू इज वेरी लार्ज and from the virtual erect diminish image of the object behind the vehicles and which enable a driver to see most of the traffic behind him or her. Solar furnace तो concave mirror, light from the sun on reflection from the mirror and concentrated at the focus of the mirror producing the heat and temperature increasing sharply 180 to 200 degrees Celsius. Section D, तो यहाँ पे आपको फॉर रेस यूज टू लोकेटेड इमेज ऑफ पॉइंट्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ उन्होंने बताया कि रे अगर पैरेलल पास होती है तो कॉनकेव में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस में से पास होगी, जबकि दोनों में फोकस में अगर प्लेन रे स्ट्रेट रे जा रही प्रिंसिपल एक्सिस की तो कहाँ से होगी, स्लांट हो जाएगी फोकस में से। सेकंड इसमें ही बात करेंगे, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, अगर रे पासिंग हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगा। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स में भी डायग्राम भी ड्रॉ करना है, मतलब ये 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स हो गया आपका, सेक्शन डी में आया मतलब, राइट, जिसके अंदर आपको वी फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, और उसके अलावा नेचर, साइज और पोजीशन भी लिखना है विद डायग्राम। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द एक्टिविटी दी गई है, डायग्राम विच एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये वाला डायग्राम है, इंसिडेंट रे ग्लास के अंदर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ग्लास के बाहर फिर से निकलेगा, उसको बोला जाएगा इमर्जेंट रे, राइट। तो फिक्स अ शीट ऑफ पेपर ऑन ड्रॉइंग द बोर्ड यूजिंग द ड्रॉइंग पिन्स। Next, place a rectangular glass slab over the seat is the middle. Next, draw the outline of the glass slab with the pencil and the name on outline as ABCD. Question 4. Take up 4 incident pins. Fix 2 pins say E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edges AB. New point. Lock for the image of the pins E and F through the opposite edges. Next, fix 2 other pins say G and H such that these pins and the image of E and F through the lie on the straight line. 8. Remove the pins from the slab. Join करो position and pins E and F join करो and produce करो line AB left EF meet AB at O. Join O and O dash
and also produce the EF up to PS shown by the dotted line in the figure 11. Next point, at O, drawn N and dash perpendicular at AB and O dash drawn M dash perpendicular CD, and also draw DL perpendicular to DP. क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।